There's some latest news coming in. This is about the farmers' protest, which has once again reached the Supreme Court. The matter seems to have reached the Supreme Court. There's a fresh PIL that has been filed at the apex court of the country alleging violation of the right to protest. The plea alleges that farmers who are on their way to Delhi to exercise their right to protest are being stopped, detained and arrested. Who exactly is the petitioner? What exactly are the details of this petition? And is there something that the Supreme Court can do in this matter is a wait and watch. But clearly this is a repeat of what we have seen about roughly 2 years ago when the entire agitation, the issue of 3 farm laws which have been withdrawn had reached the apex court of the country. Ananya Bhatnagar with us on the broadcast. Ananya, first, who has filed this petition and the details of this PIL, please? Well, definitely, this is a petition that's been filed under Article 32 of the Constitution of India before the topmost of the country by, in fact, the Managing Director of the 6th Chamber of Commerce, Augustine Theos. And very, very clearly and categorically it says that, the petitioners that are the farmers have knocked the doors of the Supreme Court because their fundamental right to protest is being violated by the actions of the government. They also go on to say that, somewhere or the other 144 is being, imposed in order to stop them from coming to Delhi. And what they clearly demand from the topmost of the country is that the government of India is directed to do a reasonable dialogue with these farmers and accept their demands, their reasonable demands that they say. Not only that, they also go on to say that all of these restrictions should be lifted and they should be allowed to come to Delhi. So how much of it does it play up before the Supreme Court? Whether there would be an urgent mentioning of this matter, whether the Supreme Court will allow an urgent mentioning of this petition or not, is something that we'll have to wait and watch for. But definitely now this farmers protest 2.0 has now also reached the topmost of the country. Ananya Bhatnagar with all the details on that very important story. We continue to track this one, but some more voices that we heard from the farmer leaders. सरकार तो 3 मंत्री के कमेटी बिठा करके उनसे डिस्कशन कर रही है, नेगोशिएट कर रही है। अभी बैठो तो अगला आधा घंटे में सीरियल करके लिस्ट दे सकती हूं किसान के लिए माननीय मोदी जी ने क्या नहीं किया। हर एक उनका इनकम बढ़ाने के लिए और उनके हाथ में पैसा रहने के लिए, जो छोटे छोटे खर्च के लिए, और छोटे किसान को मन में रखते हुए वो काम करते हैं। किसान के यूरिया के खर्च 300 रुपया से 3000 रुपया तक पहुंचा, मगर आज भी किसान 300 रुपया में ही खरीद रहा क्योंकि सरकार उस बोझ को पूरे के पूरे अपने कंधे पर उठाए। भारत सरकार लगातार कार्य कर रही है और समर्पित है। अभी आपने देखा होगा कल ही किसानों के मामले में जो दर निर्धारित की गई उसमें 340 रुपया का दर निर्धारित किया गया है और बढ़ोतरी हुई है। तो इसी तरीके से सभी क्षेत्रों में समय समय पर उसका रिव्यू होता है और उसको किया जाता है और किसानों के प्रति हम समर्पित होकर के कार्य आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में कर रहे हैं। हमारे लिए पैसा बड़ी चीज नहीं है। हम आज किसानों से कहेंगे आप इनकी मदद कीजिए, करोड़ों रुपया इनके घर में भेज देंगे। पैसा बड़ी चीज नहीं है। सो इस तरह से आज एक को गोली मारी है, अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, कल को किसी नौजवान को फिर गोली मारेंगे। सवाल यह है कि आप पर्चा कीजिए, FIR कीजिए, फिर संस्कार होगा। तो यही हमारी आज की थी और जो बाकी आपने कमिटमेंट्स की थी वो पूरी करनी चाहिए। तो पंजाब सरकार जितना जोर परिवार के रिश्तेदारों के ऊपर लगा रही है, उतना जोर मांगों को, जो हमारी मांगे थी उसको हल करने के ऊपर लगा देती तो शायद समस्या का, और हम पूरी तरह कॉन्संट्रेट कर रहे हैं अपने आंदोलन के ऊपर।